Yeah. All right, let me just share the screen. The screen, yeah. Okay. There we go. Okay, so Assalamu alaikum everyone. My name is Seher and I am delighted to be your host and facilitator for this webinar. I work as a client facilitation consultant at Learning Minds, where we specialize in providing innovative learning and development solutions to organizations and individuals. With us, we have today Muzna Ali, who is head of learning design and senior consultant at Learning Minds. Muzna takes special interest in personal effectiveness, emotions management, communication, customer services, and management. I'm sure that she will provide us with valuable insights and expertise on this topic ahead. Without further ado, I would like to welcome Muzna Ali. Thank you so much, Seher. Thank you for the humbling introduction. You're welcome. I welcome you all on board in the webinar. Thank you so much for taking out the time. Means a lot. I hope you all are experiencing a fulfilling Ramadan. It's difficult to be fasting and to be learning at the same time. I think it's one of the I consider it as ibadat, right? When you're trying and learning and doing something productive while you're fasting. So good job with that, everyone. We have 1 hour together, and in this 1 hour, what I'm going to aim is to touch upon 3 aspects of personal development, of trying and becoming your better self. These are extremely crucial if you want to embark on a journey towards becoming a better you. That is growth mindset, personal branding, and of course, the importance of online presence. Now, let me give you a disclaimer before we get onto this journey together, is that this journey is not going to end until you die. Learning never stops. Working on ourselves never stop. But I promise you that it's going to be a fulfilling, an exciting journey, and that by the end of it, you would feel really happy with yourself, right? So let me just hop into the chat and have a quick look at all of you. Again, I really appreciate different organizations you've joined from. So let's see, I really hope that I am able to add value to the time that you've given me. I'd like to begin with, just give me a second. Yeah. I'd like to begin with the poll with you guys. I'd like to know, what do you believe? Are leaders born or they're made? And if you think leaders are born, please type in A in the chat box. If you think leaders are made, write B. Go ahead. Oh my God. Look at the responses now. Lovely, lovely to hear. And would also like to know if you can mention a couple of words why you think they're born or they're made. Okay. So we are saying that both options are also, I mean, well, makes sense. You can pick both also. Sidra is also saying both. Cool. So can you also mention just, like in a couple of words, why you think it's A or B or both? How nice. Experiences and okay, fine, makes sense. Right. Some are born with the leadership skills while others have to work on it. Makes sense. Absolutely. Because of their experiences and learning skills. Nice. Thank you. So most of us here are very well on the path of learning already. It's not like it's new to you guys. And thanks to a lot of information that is easily accessible online, that now we are able to change the perception or
agree to the fact that yes, some leaders are born, some have the innate ability, while others can work on it and become that. So perfect, great. So while you agree with almost what I think, I'd like to share a personal story with you guys. Now, this story starts with the Muzna in 2011, who was stuck, confused, lost. She didn't know what she wanted to do. She thought she was good at speaking, but early on in her life, she was told that staying quiet is better, is what makes a good um, girl, woman, right? So, so that's what she believed, and she didn't know what to do with her life. She thought she could not be like others who were confident, who were better looking, who were better at their studies. She also struggled with studies. I tell you that. What she didn't know was what her calling was. Now, 12 years later, here is this Muzna in front of you. She's not only gained a lot of weight, she's also she's also gained a lot of skills. She's happier. She feels like she's accomplished. She feels that she's fulfilled. She lives generally a happy, content life. 12 years apart, and that's a lot of years in between. What happened? What did she do? What did I do? Well, let me tell you one thing. What I did was that I worked on my mindset. What I realized was that these people, and I'm sure you can think of certain people in your life who you really look up to, who people like, who you like, who when enter the room, every head turns towards them, right? And we think to ourselves, what is it that they have that we don't, right? Well, I completely agree with you on the fact that we should never compare ourselves with others. But what we can do is we can learn from them, right? And that's exactly what I did for myself, and also Carol Dweck, who researches human behavior, who has written a book on growth mindset, where she says that the key to success is actually changing the mindset. She has, through research, come to a conclusion that really what matters is your mindset, and that mindset shift is possible. In life, we sometimes feel stuck. We feel like life is not fair with us. At work, there are so many instances where we feel like we were handed the shorter end of the stick. हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो ऑर्गेनाइजेशन में रिकग्नाइज नहीं होता. But really, what it is an opportunity to look at it in a different way, to approach it in a different manner. So, through my experience, research, and engaging with very many participants over these 7+ years, I'd like to share 4 steps to easily achieve the growth mindset. Yeah. These 4 steps will help you strengthen already the mindset that you have, which is, so it's not necessary that you in one situation you can have a growth mindset, and in another you may find yourself stuck with a fixed mindset. It's an ongoing journey. So therefore, what you can do is always think of these 4 steps when you feel stuck. Number 1 is shift your perspective. You're put in a situation, you can either feel the unjust that is happening with you in that situation. You can either feel like you're not able to deliver in this situation because of XYZ reasons. You can feel like you are not able to come out of it, and that this is too
difficult for you to deal with, or what you can do is you can ask yourself that is it just this thing I can't do today? Maybe I'm able to do it tomorrow. It's just that I'm not able to do it yet. Yeah, just so whenever at work you feel stuck, whenever you are handed over a hard feedback, a constructive feedback, just tell yourself that it's just that you are unable to do this to precision, to what was expected of you yet. And so there is room for you to learn. Whenever you're handed over a challenge, what do you think? Do you think, oh my God, there's another challenge. I don't know how to go about it. There's a task. I don't know how to figure it out. Maybe I don't have the skill set to. What do I do about this? Do I leave it or do I take this challenge up? Now, that's the difference between you being overwhelmed by the tyranny of now and you thinking it's just that I'm not able to do it yet, just not yet. But in the future, if I really work on it, if I stay persistent, I'd be able to achieve it. A lot of us feel like if we have failed, then we are unable to, it's just not for us. So say, for example, you may be really, really interested in singing. You want to sing, yeah, or you want to play the piano, या आप कुछ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती है देखकर, बट यू थिंक टू योरसेल्फ कि यार जब पिछली बार मैंने वो एक प्रेजेंटेशन दी थी तो मैं जब प्रेजेंट करने लगा था तो मैं डर गई थी, घबरा गया था और मुझसे वो नहीं हुआ. सो देयरफॉर दिस इज नॉट फॉर मी. और कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीजें आती हैं, जिनके पास ये स्किल होता है तो वो ये कर सकते हैं. सो इफ समवन इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग देन दे शुड डू पब्लिक स्पीकिंग. However, what I think is that if you really like something, that you can build a skill set to. And I have experienced it over these years. Many things that I personally was not able to achieve, I have slowly and gradually learned the skill set, believed in myself, and I have told myself again and again that it's just that I failed this time and I have known another way of this thing not working. So now I can try another way and maybe that would hit. That would be a success. Maybe that would be the solution to the problem. So you keep going at it. You keep trying. Yeah. Thomas Edison says, I have not failed. I found 1,000 ways that don't work, 1,000 ways. And that's why he's Thomas Edison, right? And research also proves that you have to spend at least 10,000 hours on a particular skill to be able to master it, to completely get hold of it. 10,000 hours, that's a lot of hours. But really, if you put your mind to, then you can get to a certain stage. You can start to see improvement. It is what you believe in. And it's scientifically proven. It sounds a lot like I'm motivating you, and it sounds like I'm giving you a pep talk, but it's not really just a pep talk, although pep talks really work too. There's a lot of research behind it. If you would like, you can go ahead and look into Carol Dweck's work on growth mindset and all the researches that she's done and the numbers she's found and the change she's seen in people. If you'd like to do something new, or you want to take up a new challenge or a new project, you have to, and you think that's all the bandwidth you have. 2 projects है आपके पास और आपको लग रहा है अब इससे ज्यादा मैं projects नहीं ले सकता. क्यों नहीं ले सकते? The reasons can be, I get really, what if I fail at the 3rd one? Or what if I take up the 3rd one and they give me a 4th one too? Same package, same everything, but I am handed over more work. All of that is, you are not sure. You're just assuming all of that. And you are afraid of the unknown. So many times we don't try out new things. We don't do things that
we don't know so much about, because we fear that we don't know what's coming ahead. Yeah. So how about, instead of fearing, you just tell yourself, when you feel those jitters, when you feel uh, nervous. For example, before starting today's webinar, I felt so anxious and nervous, and I felt like I couldn't do it. I felt like why would anyone want to listen to me? But then those are the things that I was telling myself, and then there are other things. For example, what if this turns out to be really good? What if I Muzna, actually? you're not audible. All right, thank you. Yeah. I'll just Yeah, yeah. it's better now. Yeah. All right. Okay. So I was saying that, I mean, just go ahead and do it, right? Just do it, right? वो डर के आगे जीत है and all of that. Honestly, I think those are brilliant things to remind yourself, as cliche as they may sound. So आप इन चीजों को अपने जहन में, tell to yourself again and again, and that's the difference between people who stay in one place in their life and compared to people who progress. And by progress, very frankly, I don't mean you progress in your profession as in you get promotions and you get a better package. That all of that happens as a product of it. You don't have to worry about it. You just focus on your personal growth. You focus on what you want to do in life, what makes you happy, what is it that you have, that if you get, अच्छा जी ठीक है जी जी आई एम सो सॉरी, बिल्कुल। असल में मैं अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा के थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी में कम्युनिकेट करने की आदत हो गई है, बट डेफिनेटली मैं उर्दू में भी इसको इसको ज्यादा उर्दू में रखती हूँ, ठीक है। सो कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी में ये सोचें कि जिस जगह पे मैं हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ जाना है उसको जहन में रखें, और ये नहीं सोचें कि मेरे पास स्किल सेट नहीं है, राइट। तो एटलीस्ट आप सोचें तो स्टार्ट करें, देन ले आउट अ प्लान, थिंक ऑफ क्या आपको स्किल सेट चाहिए, थिंक के ऐसा अगर आपके पास ये सब हो या आप ये शख्स बन जाएं जो आप बनना चाहते हैं। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ गेटिंग फिटर, है ना, हेल्दी होना, वेट लूज करना। अगर हम इसी की एग्जांपल ले लें तो उसके लिए आप कहाँ हैं और आपको कहाँ पहुंचना है, एक रियलिस्टिक टाइमलाइन आप सोचेंगे, और फिर आप एक प्लान बनाएंगे, और फिर उस प्लान को आप एवरी डे फॉलो करेंगे, परसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे। अगर बीच में एक आधा दिन, 2 दिन, 3 दिन आपसे नहीं हो पाता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो करते रहेंगे। और ये जो प्रोसेस है, अगर आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, इसको एंजॉय करने लग जाए, जब एक्सरसाइज करते हैं तो तकलीफ होती है बॉडी में, उसको आप एंजॉय करें, बिकॉज दैट इज योर बॉडी ग्रोइंग न्यू मसल्स, फीलिंग हेल्दियर। तो उसको एंजॉय करेंगे तो वो प्रोसेस आसान हो जाएगा, और फिर यू वुड नॉट नो कि ये जो अननोन का जो जर्नी है, या आप आराम से तय करते हुए इवेंचुअली आप वहां पहुंचेंगे जो आपका गोल है। और फिर इंसान की आदत है, आपको पता है कि गोल हमारा जो होता है, हम जैसे ही उस पर पहुंचते हैं तो 2 सेकंड भी उस पर हम जो है खुशी महसूस नहीं करने देते अपने आप को, हम एक और गोल सेट कर लेते हैं अपने लिए, है ना। तो ये तो फिर चलता रहता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड जी, ग्रोथ माइंडसेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ ऑफिस में ज्यादा टाइम गुजरता है, किस तरह की बातें होती हैं जब आप सब लोग बैठते हैं, क्या सिर्फ फोकस इन चीजों पे है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कंपनी में रेज नहीं मिल रहा है, या बोनसेस नहीं टाइमली मिल रहे हैं, या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है मुल्क में, जो कि डेफिनेटली ये सब मसले अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर आपका 80% से ज्यादा वक्त इन्हीं बातों को करते लोगों के साथ और इन्हीं बातों को सोचते गुजरता है, तो फिर वो सब जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी खुद के बिहेवियर, आपके खुद के मूड्स,
आपकी खुद की डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से एक्सट्रीमली एक्सेसिबल हो गई है। तो ये सब चीजें जो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नई हुकूमत की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आपको कंपनी में बोनस की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीजें, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी डिस्कशंस फ्री होती हैं। तो आप and it's, people say, and of course, Jim Rohn, who's a motivational speaker, he says that you are an average of the 5 people you spend the most time with. And I completely, absolutely believe in this. Choose your social circle wisely. Sit with people who help you grow. Sit with people who you think are better than you. Sit with people who inspire you. लोग जो आपको इंस्पायर करें, जो लोग ऐसी बातें करें जो कि सेल्फ डेवलपमेंट के अराउंड हो, जिसमें जो कोई आपको नया स्किल सिखा सके। और वो स्किल कोई भी हो सकती है, वो बात कोई भी हो सकती है। आप जब, और आपको कैसे पता चलता है, जब आप कभी भी किसी अरेंज सेटिंग में होते हैं, किसी भी सर्कल में बैठे होते हैं, उससे अगर आप, इफ यू लीव एंड यू फील हैप्पी, सेटिस्फाइड, यू फील हैप्पी विद योर सेल्फ, यू फील लाइक यू लर्न समथिंग न्यू, तो दैट इज व्हेन आप रियलाइज करते हैं कि आप एक अच्छे सर्कल में हैं। और अगर इसी तरह आप ऑफिस में दोस्तों के साथ बैठ के, वर्क कॉलीग्स के साथ बैठ के जब बातचीत करते हैं, उसके बाद आप ड्रेन्ड फील करते हैं, अनप्रोडक्टिव फील करते हैं, आपको एक और स्मोक ब्रेक चाहिए, चाय की कप चाहिए, तो आप समझ लें कि मे बी आपको एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करनी है और कुछ नए लोग आपको ढूंढने हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करें। और ये जर्नी, लाइक आई टोल्ड यू, ये कभी भी खत्म नहीं होता पर्सनल डेवलपमेंट का। Everything starts with growth mindset. Growth mindset is the essence to anything that you do. आप कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट इज द की, राइट? सो पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, और अपना फ्रेंड सर्कल वाइजली चूज करें इज द सेकेंड वन स्टेप. एंड देन द थर्ड वन इज दिस, oh no, feedback. So let me share, and this happened with me a year ago. मुझे फीडबैक दिया गया, एंड यूजुअली फीडबैक, जब से काम करना शुरू किया तो अच्छा फीडबैक मिलता था। और अच्छा फीडबैक मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बड़ा ओपन हूँ फीडबैक लेकर, मैं तो आराम से फीडबैक सुन लेती हूँ, मुझे फीडबैक सुनने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आपको फीडबैक ऐसा मिलता है जिसमें आपकी खामियां आपको दिखाई जाती हैं, और जो चीजें आप में अच्छी हैं उनके बारे में जिक्र नहीं किया जाता, क्या आप उस फीडबैक को भी उतने ही ओपनली सुनते हैं? क्या आप सिचुएशन में अपने आप को रख के थोड़ी देर के लिए जवाब दिए बगैर उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं? फीडबैक जैसा भी हो, अच्छा होता है। हमारे यहाँ एक नोशन है आजकल बहुत के, भाई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें, किसी को कुछ ज्यादा कहें नहीं, या किसी को फीडबैक, और एक सैंडविच फीडबैक का भी बड़ा डिस्कशंस होती हैं कि पहले आप अच्छी बात करें, फिर आप एक्चुअल फीडबैक दें, और फिर आप उसको क्लोज करें किसी एक दो पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। आई बिलीव फीडबैक जो है वो एक तो आपको खुद एक्टिवली सीक करना चाहिए। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप घर पे जिन लोगों के साथ एंगेज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, बच्चे, आप उनसे पूछें कि कोई वीकली मीटिंग रखें जिसमें आप फीडबैक सीक करें, और फिर जो फीडबैक मिले, वो जैसा भी फीडबैक हो, उसके बारे में स्टेप बैक करके सोचें। I think, Taha, I think sandwich approach is not such a, is an outdated approach. Sandwich approach अब इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, प्रेफर नहीं की जाती। What is important is timely feedback. वक्त के साथ फीडबैक दिया जाए। 6 महीने पहले कोई फीडबैक दिया, कोई मसला था या कोई इम्प्रूवमेंट का रूम था, और वो 6 महीने के बाद अगर उस पर फीडबैक दिया जा रहा है, तो ये इनइफेक्टिव फीडबैक होता है। लेकिन अभी मेरा जो मैं आपको पर्सपेक्टिव दिखाना चाह रही हूँ वो ये कि ये आपके हाथ में नहीं है कि आपको लोग टाइमली फीडबैक दें। आपके हाथ में क्या है? व्हाट इज इन योर कंट्रोल? व्हाट्स
in your control is that you go to people, set up meetings, अपनी मीटिंग लॉक करें और उसमें पूछें कि मुझे फीडबैक दें. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट आप पूछें कि मुझे फीडबैक दें, राइट? तो क्यों? क्योंकि फीडबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो. और आप जितना फीडबैक लेते जाते हैं, जितना उसको प्रोसेस करना शुरू करते हैं, उतना आप बेहतर से बेहतर होते जाते हैं फीडबैक लेने के लिए, राइट? और उतना हार्ड फीडबैक की फ्रीक्वेंसी कम भी होती जाती है, बिकॉज आप उसकी तरफ ओपन अप होते जाते हैं. जब भी आप किसी सिचुएशन में हो और उसका आउटकम आपके फेवर में ना हो, तो मैं आपको एक बात मेरी याद रखिएगा कि उस सिचुएशन से आपने जो सीखा वो इनवैल्यूएबल है, क्योंकि उसका आउटकम आपकी मर्जी का नहीं था, राइट? एंड दैट सिचुएशन इज व्हाट actually makes you learn so much more, right? ठीक है जी, फोर्थ वन पे आ जाते हैं हम. All right, I would like you to do a little activity with me. ठीक है, कैमरास आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है. अपने हाथ को जरा ऐसे स्ट्रेच करें मेरे साथ, ठीक है? सामने किया आपने, यू नो, कैन यू सी दिस? स्ट्रेच करें, ठीक है? अगर आप सबके हाथ अभी स्ट्रेच हुए हैं मेरे साथ, तो अब मैं आपको कह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करें. हुआ? थोड़ा और स्ट्रेच हुआ हाथ? तो जब मैंने आपको पहली बार बोला कि अपने हाथ को स्ट्रेच करें, तो तभी क्यों नहीं आपने उसको फुली स्ट्रेच किया? क्योंकि क्योंकि ये ह्यूमन माइंड का एक तरीका है टू सेव अस फ्रॉम टू सर्वाइवल मोड में. हमें हमें जब हम कंफर्ट में रहते हैं, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं यूज करनी पड़े, राइट? So it's our minds are kind of protect us. What you have to do is you have to train it to learn to be uncomfortable, right? This was just an example. This doesn't mean कि आप uncomfortable नहीं होते हैं अगर आपने हाथ पूरा stretch नहीं किया. Just wanted to make you realize that you have to make conscious efforts to be uncomfortable. So today I'm asking you to go ahead and do one thing that makes you uncomfortable. If you are an introvert and it's difficult for you to go and have conversations with people, go ahead और किसी से जाके बात करें. आज 2-4 लोगों से बात करें, या 2-4 लोगों को अपने घर इनवाइट करें इफ्तार पे, अगर आपको पसंद नहीं है लोगों का आना. और अगर वाइस वर्सा है, यानी कि आप अपने साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि आप अकेले खाना खाने नहीं जाते, या अकेले मूवी देखने नहीं जाते, या अकेले कुछ देर बैठकर 2-3 घंटे आपसे वक्त नहीं गुजरता, तो आप उस ये काम करें. अगर नहीं खाना खाया जाता अकेले, तो जाएं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं, ढाबे पे बैठ के चाय का कप अकेले पिए, राइट? सो डू थिंग्स दैट मेक यू अनकंफर्टेबल. दे वो आपको इतना कुछ सिखाती हैं आपके बारे में जो अदरवाइज आपको नहीं पता होता, राइट? एंड another important thing that I would like to share with you guys is that in my career for a year and a half I tried extremely hard. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बिल्कुल उस सांचे में ढल जाऊं जो सांचा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, ताकि मुझे पसंद करें, ताकि मेरी वहां पे वाह वाह हो, ताकि मेरे करियर प्रोग्रेशन हो. और इससे बड़ी गलती मेरे ख्याल से मैंने अपने करियर में कभी नहीं की. इससे पहले हमेशा मैंने अपने आप के साथ बिल्कुल ऑनेस्टी से रही. जैसी मैं हूँ वैसी ही मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया. जो मेरी यूनिक स्किल सेट है मैंने उसको सामने रखा, कोर्स अलोंगसाइड लर्निंग. सो फिटिंग इन माय ओपिनियन इज अ फेल. इट नेवर वर्क्स आउट. कोशिश अगर आप करेंगे ना कि सब जैसे ही हो जाए आप भी, तो फिर आप भीड़ में गुम जाएंगे और आपकी कोई जो इनफिरादियत है वो अलग से